વડોદરાના મનીષા સૈનીએ માત્ર નૃત્ય જ નહીં પણ સંકલ્પની શક્તિનું પ્રદર્શન કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે સતત 24 કલાક સુધી પ્રાચીન ગરબા રમીને લોંગેસ્ટ ડ્યુરેશન ઓફ ગરબા કેટેગરીમાં એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં પોતાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત કરાવ્યું છે. સૌથી અદ્ભુત વાત એ છે તેમણે અન્નનો એક દાણો પણ લીધો નહોતો. માત્ર ડાર્ક ચોકલેટ અને નાળિયેર પાણીના સહારે તેમણે પોતાની શક્તિ જાળવી રાખી હતી. મનીષા સૈનીની આ સિદ્ધિ માત્ર એક રેકોર્ડ નથી પણ આપણી ગરબાની પરંપરા અને गुजराती संस्कृति ने वैश्विक मेन जो उद्देश्य था वो वही था कि हमारा जो कल्चर है, मतलब हमारी पीढ़ी आप बोल सकते हो, वो बहुत मॉडर्नाइज हो रही है कहीं ना कहीं. जहाँ पे आज हम गरबा को एज एन सेलिब्रेशन ले रहे हैं, जो ठीक भी है, बट कहीं ना कहीं हम उसको मॉडर्नाइज इतना कर रहे हैं कि हम सॉन्ग सिलेक्शन मॉडर्नाइज कर रहे हैं. हम जो रूट्स है उसके कि हम क्यों गरबा खेल रहे हैं, हम माता जी के लिए खेल रहे हैं, हम देवी के लिए खेल रहे हैं, हम देवी की आराधना के लिए खेल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा वैनिश होते जा रहा है. लोग गरबा ग्राउंड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, कितना हमें फैसिलिटी मिलेगा वहां पर. तो मेरा ये उद्देश्य था कि वो हम थोड़ा उसको ध्यान हटा के हमारा क्या रूट है, हम नवरात्रि 9 दिन ही क्यों खेली जाती है, तो वो एक डिवोशनल जो कनेक्शन है उसको हम ना भूलकर हम उसको आराधना के तरीके से ही रखें. वो मेन पर्पस था ये अटेम्प्ट का.